यस, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुन के हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, वो है द हिमालयाज। हजारों सालों से बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं वहां पे? वहां पे क्या है? क्या राज छिपा है? वहां के वातावरण में ऐसा क्या है? वो एक ऐसे जन से जानेंगे जो हाल ही में ही हैज डन अ वंडरफुल जर्नी, सोलो ट्रैवल किए हैं वहां पे। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी है, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल, बहुत सारी चीजें पता लगेगी आपको ये सेशन में। इट इज ऑल अबाउट हिमालयाज। हिमालयाज के को जो जो भी वर्चुअली जाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जानना चाहते हैं कि जब आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, क्या चीजें होती है वहां पे। तो ये सेशन आप बिल्कुल मत मिस मत कीजिए। अगर आप कोई ऐसे पॉइंट में हो कि आप थक गए हो, चाहे आप ऑफिस से आए हो, या कुछ आपका मूड सही नहीं है, ये सेशन देखने के बाद आपके चेहरे की चमक दूसरी होगी। बिकॉज टुडे यू आर गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट जर्नी। आज अद्वैतो भैया है हमारे साथ, और ये सेशन का जो पर्पस ही है, आपके चेहरे पे स्माइल आए, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बने, और हम सब मिलके दुनिया में जो भी दुख तकलीफ है लोगों को, वो सब मिटाने की कोशिश करें, एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी बनाने की और आगे बढ़े। एंड यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बनाया, इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अद्वैतो भैया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जस्ट क्विकली। सो ही इज एन MBA फ्रॉम IISWBM कोलकाता Limited. As a senior manager of marketing and operations, he has been associated with the in 2007. He took courses in various elite corporates and institute, naming few is IIT, Tata Steel, Raj Bhavan Kolkata, Indian Navy, Border Security Forces, etc. And today he is here with us. भैया, तो सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये प्लान आपका कितने दिन से चल रहा था कि एक ऐसे जगह पे एक्सप्लोर करें? और कैसे ये मतलब अब थोड़ा सा बिफोर वाला सिचुएशन बताइए, तब जाके हम एक्चुअल में आएंगे। क्योंकि बहुत जन सोचते हैं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, हिमालय घूमना है, कभी वो कर नहीं पाते हैं उस सपने को पूरा। किन किन का सपना है हिमालयाज कभी जाना? आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, और यूट्यूब में जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वी वुड गेट टू नो कि कितने लोगों की मन की जस्ट इच्छा कि कभी हिमालय के एकदम जो जो डेंस फॉरेस्ट हो गए, या फिर माउंटेन्स हो गए, वहां पे जाना है कभी ना कभी तो। ओके ओके, मी नवघन जी बोल रहे हैं। ओके, वंडरफुल। यस, कनन सर, यस यस यस। भैया आप बताइए। Sure. Thank you, Abhishek, for inviting me again to Sattva Talks. So, बहुत अच्छा लगता है. Follow your episodes, and I think I'm coming after almost a year and a half, I think, and a year, I guess. So, यस, I think it's a wonderful initiative that you and your team has done, so that experiences of so many people can reach up to masses. And I'm sure many people will be looking up to you. They do look up to you. I know that, to get some experiences at at the end of the day, and just to have a smile, as you were saying, to get the smile back on your face. So that is the only motive. So see, I have been traveling a little bit. So I was blessed to be born in a family where my parents used to prioritize travel. So every vacation when I was small, तो हर vacation में हम लोग घूमने जाते थे कहीं ना कहीं. So be it Uttarakhand, be it Himachal. So I have been to many places where those days. This is about like almost when can I say, about when I was maybe I was in my teens, early teens. So तब से मैं थोड़ा बहुत travel कर रहा हूँ. Yeah. So I have seen a lot of things since my childhood. तो वो कहीं ना कहीं that travel bug जो था ना, तो वो travel bug मुझ में already था कहीं ना कहीं. And then again, of course, when you are in your college, and जब boards
चल रहा था, तो वो थोड़ा सा बंद हो गया. बट देन आई रीडिस्कवर्ड इट अगेन, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर माय इंटरव्यूज. मैं जब एमबीए के लिए इंटरव्यूज दे रहा था हर जगह, सो दैट ट्रैवलिंग थिंग स्टार्टेड अगेन. तो मैं इंटरव्यूज देने जाता था, और बीच बीच में क्या होता था, आई यूज्ड टू गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस. सपोज आई एम गोइंग टू हैदराबाद तो मैं हैदराबाद थोड़ा घूम लिया, या मैं कहीं और जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग अराउंड. सपोज आई एम गोइंग समवेयर इन महाराष्ट्र, सो आई एक्सप्लोर दैट प्लेस. So this is how I used to do it, but I never prioritized it in, at that time of my life. तो एक बार क्या हुआ, after I joined my job, so I got an opportunity. Am I audible, Abhishek, properly? Properly, yes. हाँ, ठीक है, fine. So जब job join किए, तो I got an opportunity to travel. That was a solo travel. So that was in the northern part of Bengal. So you would have Darjeeling, and North Bengal would have the Kanchenjunga, right? The Kanchenjunga range. So मैं बहुत दिन से travel नहीं किया था बीच में, and that opportunity gave me to travel to North Bengal for office work. तो ऐसा हुआ कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, and my client, so he suggested that why don't you go out, just visit Darjeeling. Darjeeling चले जाओ यहाँ से, and just explore 2-3 days. You explore, it's the weekend. So I was a little skeptical, क्योंकि मतलब ऐसे impromptu plans बनाना कभी किया नहीं पहले. Everything was planned, and I just decided to go. एक backpack करके, I had no clothes, I didn't have any warm clothes, nothing. So I just decided to go. मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा बस, let's see. And I just prayed to Gurudev when I went for that trip. So that was my first taste of solo traveling. Yeah. As a traveler, not as something else, but as a traveler, वो मेरा पहला taste था solo traveling का. तो एक बार जो solo travel कर लिया है ना जो बंदा, उसको अगर वो taste मिल गया, that thrill and that excitement, it is like ये नशा जैसा है, ये catch up कर लेता है. And if you enjoy that, if you have enjoyed that company of yourself, then I would say that, that's the beginning of a huge, wonderful journey that you have. And वहां से मेरा भी शुरू हुआ. That was way back in 2014, I believe. 2014 or 15, I can't recall. So that is how my solo traveling began. तो यहीं से मेरा शुरू हुआ. उसके बाद धीरे धीरे I started traveling a little from my work, little from my own expenses, like from my own interest. Yeah, but properly, if you say that I started taking traveling as one of my passions and hobbies, would be from somewhere between 2018, 19, 18. That is how the passion started, generating. उससे पहले it was just a, leisure trip, but 2018, 19 से it started becoming a passion. तो ऐसे शुरू हुआ. This is how it started. भैया, ये जब आपने प्लान किया तो आपका क्या बजट था? और सबसे पहले लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए हिमालय घूमने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आपका कैसा था बजट? हाँ, so this is something that many people ask. So देखो, budget is something that is very individual. मतलब आप कैसे plan कर रहे हो? See, I have done a lot of travels in the Himalayas. I've traveled to, as I told you, I've extensively traveled in North Bengal. I've extensively traveled in Sikkim. I've traveled a little bit of Assam. I've traveled in Uttarakhand. I've traveled in Himachal. I've done Kashmir. I've done a bit of Rajasthan. Practically most of the Himalayan places I've been there. If you ask me about budget specifically, so देखो, there are 2-3 types of travelers, and accordingly the budget will vary. तो पहला जो है, that is a tourist. I classify them as a tourist. Yeah, and the second category would be a traveler. Yeah, a tourist and a traveler. There is a major difference. तो अगर आप tourist हो, तो आप you would be traveling for a particular reason. For example, you would be traveling to
let's say unwind. तो जिंदगी में बहुत बोझ आ गया है and you have a vacation. Let's say you have the Diwali vacation and you will just set out and you would pamper yourself, stay in very nice hotels, get the best of the best facilities. Yeah, so that is a tourist. Yeah, so you wouldn't want to you're not looking at really exploring the place and knowing more about the place. You're just there for luxury. It's there to unwind, to have a good time, to get rid of that routine that you're having. Yeah? So that is one kind of person who travels. Yeah, I call them the tourists. And then there's another kind. एक और है जो traveler है. जो traveler है उसका मकसद बिल्कुल different है. जो traveler है उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे luxury चाहिए. हाँ, of course, if you get something good, then why not? Great. But a traveler is a seeker, I would say. A traveler is a seeker. So most of us have done the Sudarshan Kriya here. So you are meditators, right? So, है ना? Most of us. तो आपको पता है कि you want to, know something more. Right? You're not just there to have pleasure. It's not a pleasure trip. You want to seek, you want to understand, yeah, you want to know about the place more. आपको जानना है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या नया है जो मुझे नहीं पता है उस चीज के बारे में, वो जगह के बारे में. Yeah, so you want to explore. For example, I'll tell you. So recently I did a trip to Himachal. I had gone to Spiti Valley. It's a beautiful place. If you have not traveled to Spiti in Himachal, everyone should travel. It's a very, very spiritual place. Yeah. So, for us who are meditators, we travel. I travel for a different thing. Yeah. It's the goal is very different. So I had heard a lot about this place. So there was a particular place called Chandratal. Yeah, I don't know how many of you have heard or been there. Yeah, so there's a place called Chandratal. It's a magical place. Yeah? It's a magical place. I'll tell you. I'll just share a story about it. So मैंने कहीं तो सुना था इसके बारे में. So I was following a few bloggers, and one of my favorite bloggers, so it's a couple. So they were sharing some instances of that lake being supernatural. तो वो लेक ऑर्डिनरी लेक नहीं है. तो वहां पे आपको पता है, इट्स द स्टोरी गोज दैट युधिष्ठिर जो पांडव थे, जो सबसे एल्डेस्ट पांडवा थे, सो ऑल द पांडवास व्हाइल दे वर गोइंग टुवर्ड्स स्वर्गलोक, आई मीन दे हैड वो महाप्रस्थान के टाइम पे, तो ऑल द पांडवास इंक्लूडिंग द्रौपदी, दे पास्ड अवे ऑन द वे, बट हु वाज लेफ्ट? युधिष्ठिर. तो उनका डेथ नहीं हुआ था. So Yudhishthir went to Swarg in his whole body. I mean, he was not dead. He just went like that. तो जहां से वो स्वर्ग की सीढ़ी थी ना, so that is the place where Chandratal is located. So वहां से Yudhishthir went to स्वर्गलोक. तो इसके पीछे ना बहुत एक गहरा राज है. It's not just an ordinary place. These kind of places. So यहाँ पे ना बहुत सारा जगह है इस ब्रह्मांड में, on this earth itself. So I say these are gateways to different dimensions. जैसे black holes होते हैं ना. Yeah. See, this is my hypothesis. Yeah. I may be wrong, but I have this strong feeling that these exist. So if you study a little bit about black holes, so black holes क्या होता है? So these are gateways. This is a puncture in space. Black holes क्या होता है? Punctures in space. जहां से it gives you a direct access to another dimension. एक दूसरा डायमेंशन में जाने का एक एक्सेस होता है ब्लैक होल. आई मीन वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच टू अ ब्लैक होल बिकॉज इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं ना. तो ऐसे कुछ जगह यहाँ पे है ऑन दिस प्लैनेट व्हिच आर वेरी क्लोज टू अ डिफरेंट डायमेंशन. जैसे गुरुदेव कहते हैं ना ड्यूरिंग शिवरात्रि that Shiva Tattva is very close to Earth. Yeah, that dimension is very close to Earth. So वैसे कुछ जगह है यहाँ पे which are very close to that other dimension. So
ये जो बोलते हैं ना स्वर्ग की और प्रस्थान की, सो दैट इज बेसिकली अ गेटवे टू अनदर डायमेंशन। तो मुझे ना ये सब के बारे में पता, दैट these places are like that. So as a traveler, I would go and explore that place. I would go and मेरे तो मन में इच्छा था मुझे there are many UFOs are seen there वहाँ पे. It's already recorded. आप गूगल में जाओगे, चंद्रताल के बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा. Many UFOs were sighted in that place, and there are many things that happen in that place which are beyond our intellect. तो वहां पे आप जब जाओगे ना, तो वहां पे लिखा रहता है that this is a lake for the angels. तो वहां पे बोलते हैं 6 बजे के बाद आप वहां पे नहीं रह सकते. तो वहां पे यू कांट, जैसे सुमेरु मंडप है ना हमारा, यू कांट बी देयर आफ्टर 6 o'clock. they'll ask you to go away, leave. सिक्योरिटी आपको बोलेगा आश्रम में सुमेरु में आप नहीं रुक सकते हो 6 बजे के बाद, तो वहां से निकाल देगा आपको. तो ऐसे ये सब जगह भी बहुत सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव इन द सेंस. वो जो लेक है वो लेक बोलते हैं वो परियों का लेक. So at night after 6 o'clock, so there are certain days when those energies they descend on Earth. और वो बोलते हैं वो लेक के नीचे there's another world, कुछ है मतलब nobody has been able to explore it. और वहाँ पे nobody can get down in the lake. तो लेक में जो जाते हैं तो some people have also faced death because the lake sucks you in, because the lake doesn't belong to human. मेरा जो ड्राइवर था वहाँ पे, so he said कि वो तो मनुष्य के लिए है ही नहीं, तो परियों का है, तो आपको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए. मतलब आप वहाँ पे जाओ, देखो, सब कुछ करो, बट अंदर लेक में मत जाओ. as it is the waters are freezing, hypothermia हो जाएगा लोगों को. But some people attempted, but they lost their lives unfortunately. So we should not, again. Water is warm or what? Water is warm or cold there? Yeah. Yes, it's freezing. I can't even explain how freezing it is. बहुत ज्यादा ठंड है. तो anyway, तो ये सब जगह बहुत सेंसिटिव है. तो आप अगर एक मेडिटेटर हो and if you are into spirituality, then you are aware of these things, and these things are of interest. So you are not just going there to click some photos. So I went with a group. तो वहाँ पे बाकी सब लोग फोटो खिंचा रहे थे. Yeah, so they were, for them it's a lake. Yeah, it's just a lake. It's just a normal lake. But आपको पता है कि ये नॉर्मल लेक नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है. क्या तो आप वहां पे सिर्फ फोटो खिंचाने नहीं जाओगे, है ना. You just don't go for a check-in on your Facebook or your Instagram. So you go there. So मैंने वहां पे बैठ के I did Guru Puja chanting. I meditated for a while and it was fantastic. Vibes, वो जो vibes है वहां पे, it's a different thing altogether. I can't even explain. तो ऐसे बात करते करते तो काफी सारे स्टोरीज है. ऐसे बात करते करते तो पूरा दिन चला जाएगा. तो ये सोलो ट्रैवलिंग को लेकर ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, आराम से हो जाएगा. आप कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए भैया. आपका बजट भी एक लिमिटेड था. चैलेंजेस तो बहुत है. कुछ चैलेंजेस बताइए, क्या फेस किए और क्या स्टोरीज हुई वहां की. श्योर. सो चैलेंजेस तो बहुत है. तो पहली बात तो है योर बजट. तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और अगर पूरा आप खुद से कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा. बट इफ यू आर गोइंग विद ग्रुप्स देन ऑफ कोर्स द बजट इज शेयर्ड. अगेन सोलो ट्रैवल का एक और ड्रॉबैक आई वुड से दैट द ग्रुप इज अननोन दैट यू गोइंग. तो एक होता है आप पूरा अकेले जा रहे हो जहाँ पे मतलब कोई है नहीं आपके साथ, कोई ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, आप अकेले हो. उसमें एक चीज हो सकता है कि आफ्टर अ व्हाइल यू माइट फील लोनली. होता है, काफी लोगों को होता है. यू माइट फील लोनली, यू माइट लुक फॉर अ कंपेनियन. तो ऐसा नहीं कि सोलो ट्रैवल में कंपेनियंस नहीं मिलते, काफी सारे लोग मिल जाते हैं. इनफैक्ट आई वुड से दैट सोलो ट्रैवल में यू गेट मोर कंपेनियंस टू ट्रैवल विद देन इन अ ग्रुप. जब आप ग्रुप में जाते हो ना तो आपका वो 3 4 5 6 लोग जो आपके साथ जाते हैं, मतलब नोन पीपल, तो आपका ग्रुप वही रहता है. आप उनके मतलब परे नहीं जाते हो. यू आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर इन दैट ग्रुप. बट इफ यू आर गोइंग सोलो, उसका चैलेंज तो है, आपको मतलब क्लोज पर्सन कोई मिलेगा नहीं. बट इसका एक एडवांटेज भी है कि आप यू कैन मीट so many people. You can just
go and say a hi. यहाँ पे आपका DSN का वो पूरा होता है. Just you have to break your barriers. Just go and say a hi. Yeah. So when you see people who are traveling, so जैसे हम लोग का शहर में हम लोग थोड़ा वो हिचकिचाते हैं ना जाके हाई कैसे बोलूं. But when you are on the roads, when you are traveling, you have people who have the motive to travel. So you can just go and say a hi to anyone. Hi, my name is so and so. Where are you going? This is the best way to interact with people. But definitely, you know, at times you might feel that loneliness at times. But luckily, I never felt so. I've done a lot of solo trips. I have never felt lonely in my life in solo travels. Yeah, because I really enjoy that me time. Second, third, I would say, third constraint would be that you know, when you're traveling with a group, you have to adhere to the, you know, the, I won't say the rules, but you have to do a teamwork. मतलब टीम जैसे जो ग्रुप बोल रहा है वैसे आपको करना है. Suppose you know, there are 10 of you who are traveling and you are the solo traveler, लेकिन आप 10 लोग और 9 लोग आपके साथ है, so total 10 लोग हैं. तो इसमें दिक्कत ये आ जाता है कि आपको एक साथ डिसीजन लेना है. इट्स नॉट दैट यू वांट टू डू समथिंग एंड द अदर 5 पीपल दे वांट टू डू समथिंग एल्स. ये दिक्कत हो जाती है. ये मेरा भी होता है कभी कभी. या सो दैट इज अनदर थिंग. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस लोनलीनेस एंड द टीम स्पिरिट, ये अगर आप में नहीं आता है, मैं तो बोलूंगा, और एंड लिटिल बिट ऑफ बजट, I would say that there is no other constraint. In fact, I would say there are many advantages. So जैसे I was traveling in Sikkim once. तो सिक्किम तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस समय. तो I wanted to work from the mountains. तो मुझे कहीं, मतलब मुझे एक्सप्लोर भी करना था और मुझे रहना भी था वहां पे. So I searched up the net and I figured out a very nice homestay. It's a homestay cum hostel in Pelling. It's in West Sikkim. It's beautiful. एक जंगल के अंदर है और इतना सुंदर कंचनजंगा दिखता है वहां से, कंचनजंगा रेंज. It's mesmerizing, you know. तो वहां पे I was staying with foreigners. जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते. Foreigners. Some people were from other, you know, some people were from Karnataka, some from Hyderabad, कुछ लोग दिल्ली से थे. So it was a complete stranger groups. I was in a dorm. वहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो. But the moment you go there and you start talking, because everybody is talking about traveling, yeah. So you get to know that there are so many people who are traveling, who are on the road. And you get to know about so many places. आपको कितना कुछ पता चलता है जो आपको घर बैठे कभी पता ही नहीं चलता. आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंसेस होगा about the roads, about the places, वहाँ के लोग कैसे हैं, different places में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं, what are the hardships. So you'll get to know a lot of things. Second advantage of doing solo travel is that it gives you a lot of confidence. आपको अगर लगता है कि आप में कुछ कॉन्फिडेंस लो है, तो आप एक बैग पैक करो, get your basic things, get some warm clothes, see the temperature and weather there, pack your stuff and just go. Just travel for the weekend, I would say. अगर आप आसपास रहते हो, like if you're in Delhi or you know, somewhere in North India, then you can do Uttarakhand and Himachal. If you're in Bengal, you can do North Bengal. Yeah, these are all overnight journeys. बस से ही आप चले जा सकते हो. Just an overnight bus journey. तो आप आराम से जा सकते हो ये सब जगह. So you just need that motivation, and उसमें आपको बहुत confidence मिलने वाला है. तो एक बार क्या हुआ था, I was traveling and suddenly मेरा मैं जो बस से जा रहा था, बस पे था मैं, वो बस break down हो गया. Yeah, and there was no way that we could reach. So what is the other way? What is the other way to reach that place? I had no other option but to pitch a hike. तो मुझे किसी से लिफ्ट लेना था, तो मैं निकला वहां से, वो बस ठीक होने में और 3-4-5 घंटा लग जाएगा. तो आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द बस, टुक माय लगेज. वहां पे और एक छोटा सा ट्रक जैसे छोटा वो जा रहा था. सो आई टोल्ड देम दैट, यू नो, इट्स जस्ट 3-4 आवर्स अवे, तो मेरा बस यहाँ पे खराब हो गया है, कैन यू प्लीज टेक मी देयर. सो
I just got onto that truck. छोटा सा ट्रक था, बैठ के 3-4 घंटे में I reached my destination. So these are the things. Confidence. Third is I would say ability to take spontaneous decisions. क्योंकि आप जब एकदम अकेले हो, सोलो हो, so there is no way you're going to get a lot of help from people. तो आपको खुद से डिसीजन आपको लेना है. तो अगर आपको लगता है आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा पुअर हो, so go on a solo travel. Go on a solo travel. And then another advantage I would say is that your life is going to be full of adventure. Solo travel can never be devoid of adventure. आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा because there is always uncertainty. आप जब भी कहीं जा रहे हो ना, uncertain है सब कुछ. कब क्या होगा आपको नहीं पता. You never know. So we were traveling in one of the places and वहाँ पे suddenly मौसम खराब. Yeah, Himalayas में तो होता ही है. I'm sure those who have traveled, you know how erratic the weather of Himalayas are. Mountains में कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो suddenly आपका weather खराब हो गया. So then what do you do? Yeah, आपके पास खाना नहीं है. Suddenly you get trapped in some place and you have nothing to eat. What do? You have to survive on Maggie. Even though it's unhealthy, but वहाँ पे पहाड़ों में तो मैगी का अलग ही टेस्ट होता है. Yeah, so you might just have to exist on a cup of hot coffee or hot tea. Yeah, वहाँ पे जो मिलता है. Yeah, so if you are on a diet, you might just have to survive on आप चावल नहीं खा रहे हो, कार्ब्स नहीं ले रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको वही मिल जाए. So you have to compromise on all these things. So आपको ना बहुत strong बना देता है सोलो ट्रैवल. So I have felt that for me, that I have felt that my personality has become much better. Yeah? And आपका personality better होगा because आप बहुत लोगों से मिल भी रहे हैं. Yeah? So these are some of the advantages of solo traveling. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा इसमें. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग भी ये ट्राई कीजिए जो लोग यूट्यूब में है. ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा कि कुछ एडवेंचर करते हैं. 200-300 रुपए रखे होंगे मैंने जेब में, और मैं गुजरात से महाराष्ट्र तक का जर्नी मैंने सोचा चलो तय करते हैं. एंड रात भर लिफ्ट मांग मांग के जो मैं पहुंचा हूँ, एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस. बिकॉज एक जो उसमें छोटी सी कहानी जो मुझे हर वक्त याद रहेगी वो ये है कि मैंने बहुत ट्रक वालों को ऐसे हाथ दिखा दिखा के रोक रहा था, कोई नहीं रुक रहा था. एंड लास्ट में किसी को मैंने कुछ, उस वक्त का दिमाग बहुत तेज काम करता है, अब ये करे क्या, ये करे क्या, क्या करे. और मैं तो बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं. वो आप देखोगे चाहे गुरुदेव हो, उन्होंने भी एक अकेले में कुछ समय बिताया है, ट्रैवल किया है. अब कोई भी देख लो, योगी जो भी है वो अकेले में ट्रैवल जरूर किए हैं. वो एक स्पिरिचुअल सीकर का हिस्ट्री देख लोगे, वो रहता ही है. तो फिर उसके बाद मैंने वहां पे दुनिया देखी. मैं रोका, लास्ट में कुछ ट्रिक लगाया, उनको बोला कि प्लीज मुझे जाना है, ये वो करके कुछ कहानी सुनाया मैंने, तो ट्रक वाला ने बिठा लिया. फिर ट्रक वाला ऐसा था कि मुझे ये था कि इतनी लंबी जर्नी का बस वाला भी लेता तो मिनिमम 100-150 रुपया तो लेता ही लेता. उनसे बात की, उनकी कहानी सुनी, उनकी पूरी जर्नी सुनी, एंड ही आल्सो गॉट लिटिल बिट इमोशनल बिकॉज नो वन एवर हर्ड हिज स्टोरी इन द होल लाइफ. मैंने उसकी कहानी सुनी, लास्ट में जब उतर रहा था तो ही फेल्ट सो नाइस. उसने बोला कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. मैंने बोला ये पैसे रख लो. बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता आपसे पैसे लेके. एंड दैट टाइम आई फील कि जो ऐसे लोग होते हैं दे आर सच ऑफ बिग हार्ट. तो ये दुनिया की जो असलियत है वो तभी आपको पता चलती है कि इंडिया में कितनी सारी चीजें हैं, कैसे लाइफ्स है. हम लोग अपने शेल में रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें. तो आई गेस भैया यू कैन आल्सो रेजोनेट विद दिस कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो यस भैया प्लीज. एब्सोल्युटली. एक और चीज है, एक और स्टोरी मुझे याद आया. तो ये भी हिमाचल की एक स्टोरी है. तो एक जगह पे हम लोग कैंपिंग कर रहे थे. तो हमारा जो ड्राइवर था, तो उसने बोला कि दिस इज लाइक एकदम एंड सीजन है, तो कभी भी स्नोफॉल हो सकता है. और अगर स्नोफॉल हो गया एक बार, अगर आपका मौसम खराब हो गया, तो वहां से 4-5 दिन पहले हम लोग निकल नहीं पाएंगे. लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और ऐसे like around 20-30 people were stranded in that place for 1 month.
फिर लोकल्स आके वहाँ पे रेस्क्यू किए थे, बिकॉज इतना स्नोफॉल हो गया था, मौसम खराब गया पूरा वहाँ। तो हम लोग वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, एंड इन मतलब क्वाइट सरप्राइजिंगली उसी दिन मौसम खराब हम लोग, और हमारा जो ड्राइवर है वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम लोग रह नहीं पाएंगे, रिस्क नहीं ले सकते, अगर स्नोफॉल मतलब हो गया रात को बहुत ज्यादा तो सुबह गाड़ी तो चलेगी नहीं, एंड यू गाइस विल बी स्ट्रैंडेड देयर फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज। बट मुझे वहां पे कैंपिंग करना ना या आई वांटेड टू टेक दैट रिस्क, देखते हैं सो आई प्रेड टू गुरुजी एक्चुअली all my group, all my team members, मतलब मेरे साथ जो भी लोग थे, so everybody said we'll go back, चलो वापस चलते हैं, we are not willing to take that risk even if it is a 1% risk, yeah, we are not willing to take that risk, but मुझे ना वहां पे रहना, because I am a little adamant तो क्या बोलता, मतलब फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसमें क्या है, मजा ही तो है, कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। तो मैंने ना बाहर देखा, टेंट के बाहर सामने तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, so that is a place from where you can see the entire Milky Way, मतलब आकाश में many people go there for stargazing वहाँ पे, तो ऐसे काफी सारी जगह है in हिमाचल, many places, तो I wanted to gaze at the stars and I wanted to see that Milky Way, इतना दूर तक आए हैं, 7 hours we travel to get to that place and camp there, तो मुझे रहना ही था। तो आई वॉज एक्चुअली हैविंग मैं बहस कर रहा था अपने ग्रुप मेंबर से कि मुझे यहाँ रहना है, तुम लोग जाओ तो जाओ, मैं यहाँ रहता या, बट नन ऑफ देम, मतलब मैं जो वैसे भी आई वॉज ट्राइंग टू इंटिमिडेट देम, तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं मुझे जाना है, हम लोग को जाना है। सो आई वॉज फाइनली लाइक चलो क्या कर सकते हैं अभी, आई टोल्ड यू ना ग्रुप अगर you might have a disagreement with the group that you're traveling with, so this is one more disadvantage of being solo. Anyway, तो मैं ना दिल से प्रे कर रहा था, I was praying to Gurudev, I was praying, I was even praying to the weather gods, मैंने सोचा जो भी यहाँ पे gods है, whoever is there, Gurudev please help me, I really want to be there, I really want to see the stars. वहां पे it has never happened with me, this was the first time it happened with me. I went inside a tent to have some warm water या चाय वाय पीने गया था, I just came out and this was not even 5 minutes, जब मुझे सामने वाला टेंट ही नहीं दिखाई दे रहा था, इतना फॉग था, स्नोफॉल हो रहा था, within 5 minutes within 5 minutes the entire place, the fog had vanished. मुझे पता नहीं चला कि मैंने भी देखा है, मतलब I have seen weather changing drastically, but within 5 minutes the weather changed, snowfall gone, suddenly I see 2 stars and the moon in the sky, 2 stars दिख रहे हैं, मतलब आकाश क्लियर है, sky is clear, and within the next 10 minutes the entire place just cleared up, suddenly cleared up miraculously. तो वो जो ड्राइवर हमारा था उनसे कि ये कैसे हो गया, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कैसे हो गया ये, दिस इज अ मिरेकल, मतलब कभी हो ही नहीं सकता ये, दे हैव नेवर एवर फेस्ड दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन दैट प्लेस, क्योंकि वहां पे एक बार वेदर खराब तो खराब, या सो दैट मेड मी रियलाइज दैट व्हाट इज द पावर ऑफ संकल्पा, इफ योर संकल्पा इज स्ट्रांग एंड सच प्लेस, इसीलिए हिमाचल और उत्तराखंड को बोलते हैं ना देवभूमि. व्हाई डू दे से दैट? बिकॉज apparently they say that energy, the devtas, that those energies, those cosmic energies, उनका प्रभाव वहां पे बहुत ज्यादा है. So the moment I prayed and I had that, I'm not saying because of me it happened, but I thought that I was just so grateful to Gurudev that he made us see that place, and I thought that sankalpa can work miracles, and so that's the power of sankalpa that I faced in that place. एक और है, many people ask me कि आप लोग I was reading a meme, एक कहीं पे meme निकला, there was a lot of controversy regarding that meme. तो वहां पे लिखा है कि लोग इतना चल के जाते हैं, ट्रेकिंग करते हैं just to see a temple on the top of a mountain.
आप देखोगे ये हिमाचल उत्तराखंड में काफी सारे जगह है जहाँ पे टेम्पल्स है, एंड दे आर ऑल ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, आपने देखा होगा। तो और वहां पे चल के जाना पड़ता, यू कांट, मतलब यू कैन गो बाई वॉकिंग और टेक अ हॉर्स और जाता है। जैसे केदारनाथ आप देख लो, आपको चल के जाना पड़ेगा, अभी तो 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। व्हेन आई वेंट इट वाज 14 किलोमीटर। अभी तो फ्लड के बाद इट्स 20 और समथिंग लाइक दैट। काफी सारे ऐसे तुंगनाथ, आप बहुत सारे टेम्पल्स है, आप देख लो, तो वो ऐसे ही चल के जाना। आई गिव यू वन एग्जांपल। तो एक बार ना मैं गया था कश्मीर में। तो कश्मीर में श्रीनगर में, I mean, if you've seen Mission Kashmir, I think many people have seen that movie, ना Mission Kashmir, ऋतिक रोशन का आया था काफी साल पहले। तो वहां पे so that terrorists they wanted to blow up a temple called Shankaracharya temple. So those who have been to Kashmir, those who have been to Srinagar, so this Shankaracharya temple is very famous. तो वहाँ पे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य meditated for some time. Yeah? तो वहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल एक टेम्पल है, और वो टेम्पल के एकदम बगल में देयर इज अ गुफा, देयर इज अ केव जहाँ पे आदि शंकराचार्य हैड मेडिटेटेड, बगल में है। तो काफी सारे लोग वो मिस कर जाते हैं, सो दे वॉक अप ऑल द वे अप, इट्स अ आई मीन इट्स अ लॉन्ग क्लाइंब, स्टेयर्स है, और एकदम पहाड़ के ऊपर दिखता है, नीचे से डल लेक से दिखता है। तो चढ़ के जाना पड़ता है। तो इट टेक्स यू अबाउट 45 मिनट्स टू क्लाइंब अप टू दैट टेम्पल। तो लोग क्या करते हैं, टेम्पल में जाते हैं, सो दे पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द डेटी एंड देन दे कम बैक। बट इफ यू एवर गो टू श्रीनगर एंड इफ यू एवर विजिट दैट टेम्पल, आप वहां एकदम बगल में एक गुफा है कॉल्ड शंकराचार्य गुफा, तो आप वो गुफा के अंदर जाए, वहां का एनर्जी जो है ना वो अलग अलग है। और वहां पे लोग जाते हैं, दे जस्ट मतलब ऐसे बैठते हैं, थोड़ा सा आंख बंद करते चले आते। यू नो व्हाट आई डिसाइडेड, क्योंकि वो वहां पे ना मुझे एक स्पॉन्टेनियसली आई वाज ट्रैवलिंग विद फ्यू ऑफ माय अदर फ्रेंड्स, सो दे आर आल्सो फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग। तो हम लोग वहां पे बैठे, और अंदर से ये इच्छा आई कि यू नो दैट वी शुड चांट द गुरु पूजा मंत्र, एंड वी जस्ट चांटेड द गुरु पूजा मंत्र इनसाइड दैट गुफा। और वो जो मेरा गुरु पूजा चैंटिंग का एक्सपीरियंस था ना, it was of a different level altogether. I have never had that experience. I can't explain it to you, but वो अंदर there was a vibration, क्योंकि वो गुफा में तो कुछ एनर्जी है अलग से, because आदि शंकराचार्य had meditated there, and so Gurudev was saying something very interesting about these places. He said that ये जो जगह है ना, ये सब जगह कोई संत या some very high yogi जो लोग वहां पे मेडिटेट करके जाते हैं, so those places they are glorified by their presence, because they had gone there, that is why these places are now glorified. तो ये सब जगह डिफरेंट है। तो एक और जगह है भूटान में, भूटान में पारो, there's a place called पारो, और पारो के आसपास ना, जैसे there's a trek from पारो, it's called तक्षंग monastery. तो if you have seen the images of Takshang, it's called tiger's nest. तो वो एक ऐसी जगह पे वो टेम्पल मॉनेस्ट्री है जहां पे you can never imagine that somebody would take all the bricks and everything. It's actually perched on a mountain. जैसे बर्ड्स नेस्ट होता है ना, नेस्ट क्या होता है, मतलब एकदम ब्रांचेस एंड ऑल में से पर्च्ड होता है, जो हैंगिंग होता है। तो वैसे दैट टेम्पल इज लाइक दैट। देयर इज नो वे दैट anybody can take so many bricks and build such a big temple, a monastery there. और वहां पे रोड्स आर वेरी बैड, वहां पे रोड्स तो अभी बने, पहले तो रोड भी नहीं था। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? द स्टोरी इज दैट you might have heard about this guru. His name is Guru Padma-Sadhna. In Tibet, they call him Guru Rinpoche. He's a very, very, very famous guru of the Tibetans, of the Buddhists. Guru Padma-Sadhna. So, Guru Rinpoche. So, it is said that he had because he was a very, very high yogi, very, very very powerful yogi. So all these yogis had siddhis. Yeah.
So if you have read or heard Gurudev's Patanjali Yoga Sutra, you would know about all these siddhis. He speaks about it in the 3rd chapter. So there's a siddhi of flying also. People, yogis can, yeah, these are siddhis, no? And then they can manifest from here in different places. The same person can manifest in 2-3 places at the same time. And so there's a story that one of his disciples who was also a very, very, very powerful yogi, वो भी बहुत powerful थे, तो उन्होंने खुद को एक टाइगर में मैनिफेस्ट किया था, and that tiger had that power to fly. So Guru Padma-Sambhava, he rode that tiger and flew to that place. और वहां पे जाके he meditated. So there's a cave. So वहां पे he meditated. And I think he was there for about 3 years, 3 months, something like that. और वहां पे his disciples helped to take all the material and build a monastery. तो वैसे ही वो गया, और जो the locals say कि वहां पे they have flown there and taken the bricks and built that monastery. चलो अभी तो वो काफी renovated है, yeah, but the initial monastery was like that. So आपको ना, आप जब हिमालयस में ट्रैवल करोगे, so you get to learn about a lot of mystics, yeah, and things which don't really seem normal here, they seem normal in the mountains. आपको पता है कैलाश में, माउंट कैलाश जो अभी तिब्बत में है, माउंट कैलाश में मानसरोवर के सामने अगर आप कभी जाते हो, तो वहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज डिफरेंट. वहां पे टाइम अलग से वर्क करता है, बिकॉज आई बिलीव दैट इट हैज अ डिफरेंट डायमेंशन. आई मीन इट्स अ गेटवे टू अ डिफरेंट डायमेंशन वंस अगेन. तो वहां पे अगर आप जाओगे, सो आई मेट दिस लेडी, हाँ, तो आई वाज इन किन्नौर. तो किन्नौर में एक लेडी थी, शी हैज ट्रैवल्ड टू माउंट कैलाश 3 से 4 बार. एंड शी इवन शी टोल्ड मी, शी सेड दैट वहां पे आपका नाखून और आपका बाल, या इट विल ग्रो एट अ फास्टर पेस. सडनली यू विल सी आपका नाखून बढ़ गया है, आपका बाल सडनली बढ़ गया है थोड़ा थोड़ा, या इफ यू स्टे देयर फॉर लाइक 2-3 days 4 days, आपको ये देखने को मिलेगा. सो टाइम वर्क्स डिफरेंटली इन सच प्लेसेस. माउंट कैलाश, देयर आर 5 कैलाशेस, आपको पता है. एक तो है आपका कैलाश मानसरोवर, एक है आपका श्रीखंड महादेव, एक है आदि कैलाश, yeah, there's Kinnor Kailash, and there's another one which I think Mani Mahesh, yeah. So there are 5 Kailash, yeah, and all these Kailashes, they'll have a kund, and these kunds are lakes, and all these lakes are very powerful. वहाँ पे ब्रह्म कमल आता है. Have you ever seen a Brahma Kamal? It was reported in ashram में एक picture आया था गुरुदेव के साथ, ब्रह्म कमल blossomed in ashram. पेटल्स होते हैं ना शायद उसके. हाँ, तो बोलते हैं ये ब्रह्म कमल जो है वो ब्रह्मा जी के हाथ में रहता है, ब्रह्म कमल. एंड दैट इज द पुराणों में बोला जाता है कि, रामायण में बोला जाता है कि व्हेन लक्ष्मण वाज हील्ड, आफ्टर Hanuman went to Sanjiv, where he got the medicines. Yeah, when Lakshman was healed, then all the devtas, they sprinkled Brahma Kamal on earth, and most of these Brahma Kamals, they fell in Uttarakhand, जहाँ पे अभी Valley of Flowers है ना. So most of the Brahma Kamals, they blossom in such places where the energy, where the divine energy, जो दैवी शक्ति है वहाँ पे, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ये ब्रह्म कमल उगता है, वहां पे ब्लॉसम होता है. So these places are the places where that the energy is very high, very high. Yeah. So all Kedarnath, Badrinath, Valley of Flowers. Now even we can count Bangalore Ashram. Yeah. So these are the places where there are Devi Shakti. Yeah. You know how? So this is a little away from the Himalayas. I'll just share a story with all of you. Yes, if you have time, it's very, very interesting. Yes. Huh? Those Yes, who are some of, I don't know if you have heard. So this was in August, like this year. Yeah. How many of you know about the story behind this place? Sumeru Mandap. Everybody knows, right? So Sumeru Mandap is वहाँ पे बोलते हैं ना, वहाँ पे देवी का वास है, वहाँ पे देवी, साक्षात देवी वहाँ पे है. देवी शक्ति है.
तो वहां पे कहते हैं कि देवी शक्ति वहां पे साक्षात है क्या? I have heard this, if you have heard some videos, I think Swami Brahmateji ji was narrating one story in one of his experiences that, there was one lady who had come and a long time back and stayed at ashram, and she heard, that ghumru ki awaz, at night, throughout the night, that payal ki awaz, ghumru ki awaz was there all around that room, old ashram. So, yeah, that's the Devi manifestation, and that's Devi Shakti there. तो ये मैंने सुना था, ये तो कहानियों में सुना है. तो इस बार हम लोग अगस्त में we had a program in ashram and I was assisting a DSN program. And DSN में तो आपको पता है, जिन्होंने किया है, तो आपका जो एनर्जी है वो एकदम अलग लेवल पे चला जाता है ना. DSN energy, suddenly your consciousness it blossoms suddenly because of the regular Padma-Sadhna course ही ऐसा है. तो इतने सारे कोर्सेस चल रहे थे उस समय, तो कोई वेन्यू नहीं मिल रहा था हम लोगों को. सो देयर वर अबाउट आई थिंक 40-50 पार्टिसिपेंट्स, और कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है. सो वेन्यू वाज गेटिंग शिफ्टेड अगेन एंड अगेन. तो लास्ट जो 2 दिन था, हमें वेन्यू मिला ओल्ड आश्रम. तो बहुत दिन बाद मुझे ओल्ड आश्रम में कोर्स अटेंड करने को मिला. द लास्ट कोर्स आई अटेंडेड इन ओल्ड आश्रम वाज माय टीटीसी. तो ये था आपका जो आपका डाइनिंग हॉल है ना, उसके ऊपर डाइनिंग, टॉप ऑफ द डाइनिंग हॉल. और वहां पे ना बहुत बंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा बंदर है वहाँ. जो गए हैं उनको पता है. तो लास्ट 2 डेज वहां पे कोर्स शिफ्ट हो गया है. एंड थर्ड डे जो है, बंदर का बहुत प्रॉब्लम. बंदर दे आर लाइक दे आर गॉन मैड, क्योंकि वहां पे कोर्स चल रहा है और डिस्टर्बिंग अस एंड मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है. तो बहुत बहुत परेशान किया बंदर ने. लास्ट डे वो जो बंदर थे, दे वर सुपर एनर्जी. मतलब कुछ तो चढ़ गया, कुछ तो आ गया उन लोगों में. monkeys were creating a mess that day, last day. Around 10 o'clock the session began, and about 11 o'clock, so there's a special meditation which is conducted in the DSM. So just before the meditation started, we could hear, by that time सब लोग बहुत जोश में है उस समय. बहुत जोश में, इतना सारा प्रोसेसेस हुआ, सब इतने जोश में है. Yeah, Abhishek, are you there? Are you able to listen to me? Yes. Okay, fine. So तो बहुत लोग मतलब जोश में आ गए. और फिर मेडिटेशन चालू हुआ, और हम लोगों को ना पीछे से सुनाई दे रहा है, there's someone who's walking, and वो पायल की आवाज सुनाई दी, घुंघरू की आवाज. It was a very strange sound, and it was there in the background, very faint आवाज. और वो आवाज ना कंटिन्यूअसली हम लोग को सुनाई दे रहा है. Sometimes from the back, sometimes from the front, sometimes from the side. हम लोग ना इतना कोर्स में है, तो nobody really paid much attention to it. Yeah. And during the meditation that was happening there, the meditation was for 20 minutes almost. Or that sound of that ghungru, somebody walking, वो पायल की आवाज, it just got louder and louder and louder and louder and louder. Yeah. हर जगह से वो आवाज आ रही है. And I, for a split second, suddenly remembered Swami Brahmateji's story about that, the Devi story. But then I thought it's too good to be true. I mean, how can this happen? And it went on and on and on and on and on. 20 minutes ऐसा हुआ, and then the meditation stopped, and we again got back to the course, and then the course ended. 2 बजे course ended. We realized that about 12:30, जो भी वहां पे बंदर इतना परेशान कर रहा था ना हम लोगों को, वहां पे all the monkeys suddenly disappeared. Suddenly, एक भी मंकी वहां पे नहीं था, एक भी मंकी नहीं था वहां. Yeah. And that sound of that घुंघरू वाला जो मतलब किसी की चलने की आवाज, वो that was not a very normal आवाज. मतलब वो कोई ऐसा नहीं था कुछ चल के जा रहा है. It was coming from air, from thin air. हवा से आ रही थी वो.
और सिर्फ कोर्स पार्टिसिपेंट्स को वो सुनाई दिया, और मुझे सुनाई दिया, आई वाज असिस्टिंग, एंड टीचर को सुनाई दिया. After the course ended, when everything was quiet, some monkeys chale gaye, participants chale gaye, I went and asked, like me and my other, so there was other person who was assisting, so we went and asked the teacher, did you hear this sound? एक कोई पायल की आवाज थी वहां पे, आपने सुना? She was like, yes, sir, मैंने भी सुना. मैंने सोचा कोई वहां पे किसी ने, मतलब कोई फोन में कुछ बजा रहा है. And it was not a फोन में बजाने वाला आवाज, हाँ, it was a proper घुंघरू की आवाज, for half an hour. And उस समय ना हम लोग को गूज बम्स आ रहे हैं, गूज बम्स. And our teacher went and told Gurudev, Darshan line was there, शाम को, Gurudev, we heard this. And Gurudev just looked at her and he smiled. Oh, तुमको सुनाई दिया? And then he left. Yeah, so that Daivi Shakti is there, and it is there. I also experienced this. जैसे कहते हैं ना कि दैवी शक्ति तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि आपको हिमालयस में ही जाना पड़ेगा टू एक्सपीरियंस दैट दैट ब्लिस. ऐसा नहीं है, आपको हर जगह वो मिल सकता है, हर जगह है. लेकिन जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि टेम्पल में क्यों जाना चाहिए, भगवान तो हर जगह है. लेकिन जब आप फैन के नीचे बैठते हो तो हवा आपको ज्यादा आता है, इसी के सामने बैठते हो तो हवा ज्यादा महसूस होता है ना. तो ये कुछ जगह है जहाँ पे एनर्जी बहुत हाई है, दैवी शक्ति बहुत ज्यादा है. तो आप ये सब जगह जाते हो तो आपको वो महसूस होता है, you feel that. And especially for meditators, even if you have tasted meditation थोड़ा बहुत, आपको ये महसूस होगा कि ये एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है. जैसे आप किसी के घर पे जाते हो and suddenly some places you go and you feel so nice, है ना, और कहीं पे आप जाते हो तो वहां पे एनर्जी आपको उतना अच्छा नहीं लगता. You can feel it, meditators can feel it. अगर आप सुदर्शन क्रिया करते हो रेगुलरली तो आपको ये पता चले, you can resonate with what I'm saying. तो ये हिमालयस कुछ कुछ जगह है that you feel that vibe. आपको लगता है कि आपको दिल को कुछ सुकून मिलता है. जैसे आप रुद्रम सुनते हो ना, कभी आप देखना, बहुत टेंशन में हो तो ऐसे बैठ के थोड़ा रुद्रम सुनते हो, तो वो जो आवाज है, वो जो चैंटिंग को समझ में नहीं आता है क्या, लेकिन दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू इट सूथ्स यू फ्रॉम इनसाइड. कहीं ना कहीं कुछ ध्यान आ जाता है या ध्यान में आ जाता है, वो अच्छा लगता है. तो वैसे ये हिमालयाज में कुछ कुछ जगह है यहाँ पे आप जाते हो तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है. एंड मेनी पीपल एक्चुअली दे लीव एवरीथिंग एंड गो टू द हिमालय. गुरुदेव नेवर एनकरेजेस यू टू डू दैट. यू शुड नॉट लीव एंड ऐसा कुछ वहां पे है और यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है ना. देखो ब्रह्म कमल वहां पे ब्लॉसम होते हैं, आश्रम में भी होता है, जहाँ पे तो गुरु है. जहाँ पे गुरु है वहां तो वो तो सबसे ऊपर. Guru is above all these experiences and above everything. I'll just share one experience. Not an experience, just information. आपको पता है, there is a place. I was reading about it a little bit. I mean, I've not experienced it. I'm not that big a yogi. So they say there's a place called Gyan Ganj. How many of you have heard about this? Gyan Ganj. उसको it's more popular as Siddhashram. Have you heard about this place? Buddhist call it. ये ऐड आता है YouTube में, सिद्धाश्रम. हाँ, सिद्धाश्रम बोलते हैं इसको. हाँ, in Buddhist culture they call it Shambhala. Shambhala. So this is a place which is not accessible by normal human beings. हम लोग जैसे जाके एक्सेस नहीं कर पाए. So this is a place where all the yogis they stay. Yogis मतलब जिन्होंने बहुत साल से, मतलब ऐसे बहुत सालों से, हजारों वर्षों से वो वहां पे है, वहीं पे है. 100 years old, thousands of years old, वहां पे है yogis. These are siddhas. We call siddhas. Siddhas would be the right word. So that's why it's called Siddhashram. So very selected yogis, they get a glimpse of that place. This is a story. I have not experienced it.
but this is how it goes. And if you search on YouTube, you just or if you search on Google, you'll get a lot to know about. So there was one saint. I think this is about 100 years ago. So there was one saint who had actually gone there, and he had experience and he had learned something. There's a Vijnana, all these sciences there. He had learned something and he had come and come. He's from Kolkata, basically, 100 years back. Yeah. So it is said that it is still there. Abhi bhi hai wahan pe. And these siddhas are still present. Many siddhas. Yeah. And you might see them, you may not see them, and it is totally up to those higher beings. So this earth, we see that हम लोग ही है, मतलब मनुष्य है, जानवर है. This is that day only Guruji was saying, what we see is just a minuscule part of what is. Yeah. There can be so many other beings right there in your room. Yeah, possible. So many. There could be another dimension coinciding with this dimension. हो ही सकता है. There could be other beings on this planet. Yeah. So these siddhas are nothing but higher spiritual beings. Higher spiritual beings. So they're still there. ये सब रहते हैं. And but above all these is Guru. Yeah. Above these is Guru. So हम we have the ultimate with us. ऐसे yeah, we have the ultimate with us. So I would say going to the Himalayas gives you, so you're closer to that experience of stillness. भागना नहीं है, छोड़ छाड़ के कोई भागते नहीं है वहां पे, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, because we have the highest with us, so you're not going to get anything extra there, but definitely go there to unwind. जैसे हम लोग advanced course में जाते हैं ना, to unwind, so you can do some trips and just go and unwind. एक लेक है, ये आपका धंकर बोल के एक जगह है हिमाचल में, धंकर. सो धंकर में एक लेक है. इस लेक का एक मिस्ट्री है. मिस्ट्री ये है कि वो लेक किसी किसी को दिखाई देता है, किसी किसी को दिखाई नहीं देता. या ऐसा मिस्टीरियस लेक है. So all these mysteries, which you hear in the stories, you actually experience them in the Himalayas. तो वो लेक किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता. So when we went, we saw half the lake, and half the lake was not there. We don't know what happened to that lake. और उस लेक में ना मछली भी है, वहां पे लोग फिशिंग भी करने जाते हैं कभी कभी. So there was one guy at a cafe नीचे, तो उसने बोला when we went, हम लोग मछली पकड़ने गए थे वो लेक में, और कोई मतलब हम लोग को लेक ही नहीं दिखा वहां. 2 days after that they went, trekked up, and उनको लेक दिखा. तो वो वो एक लेक है ना, वो ये सब मतलब नॉर्मल जगह नहीं है. तो वहां पे बोलते हैं दैट ये देवताओं का जगह है, देवताओं का लेक. तो उनको अगर आपको वहां के जो डेटीज है, वहां के जो एनर्जीज है, उनको अगर लगता है कि यू आर एलिजिबल टू विटनेस इट, देन ओनली यू सी. या दैट इज व्हाट दे से. बट आई एम श्योर देयर इज अ साइंटिफिक रीजन आल्सो. जब वो लेक अंदर चला जाता है, तो जमीन के अंदर चला जाता है, फिर से प्रकट होता है. देयर इज सम मैकेनिज्म, डेफिनेटली अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस. या सो such places, just go there and sit, and you will be in a different zone. तो आप जब वहां से नीचे आओगे ना, प्लेन्स में आओगे, तो आपको लगेगा, I have noticed this whenever I travel solo, yeah, with a group, whenever you go to the mountains and you get acclimatized to that energy वहां पे. जैसे कि केदारनाथ हो गया, आप कोई भी ले लो, केदारनाथ हो गया, you go higher up in the Himachal, you go higher up somewhere in Badrinath, you go to other places. Yeah. So even some places in Kashmir, so ये सब जगह थोड़ा high voltage जगह, high voltage places. Yeah. High voltage in the sense very high energy places. Yeah. तो वहां से अगर आप वापस आते हो ना प्लेन्स में, like you come back to your city, let's say Delhi, कोलकाता, जहाँ पे भी आप आते हो, आपको सडनली लगेगा there is a shift, suddenly you feel ये मैं कहाँ से कहाँ आ गया. Yeah, because those places in Himalayas are like that. जैसे आपका होता है ना, आप आश्रम में जाते हो, कोर्स करते हो, और फिर जब घर वापस आते हो, सडनली आपको लगता है ना कि
मतलब कहाँ थे अभी कहाँ गए टाइप ऑफ, है ना, एक होता है। तो हिमालयस आर लाइक दैट, यू गो देयर, यू गेट 6 days, 5 days, 6 days, you stay there, you get acclimatized to that energy, yeah, and then you come back and you know that अभी एनर्जी का थोड़ा डिफरेंस है। तो ये बहुत होता है। So that these are the reasons why you should travel, yeah, to be a seeker. भैया हिमालयाज में ज्यादातर मैंने नेपाल में ये सुना है, यटीज को लेके, यति के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। हाँ हाँ कई जन उसको बोलते हैं कि वो दिखना नहीं चाहिए, उसके पाँव के निशान भी जो शेरपा होते हैं वो देखने से मना करते हैं कि नहीं देखना है। कई जन बोलते हैं कि, कई स्टोरीज मैंने ये सुनी है कि जो माउंटेन सिकनेस हो जाता है, जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अब उसका कोई बचने का रास्ता है, उसमें यटीज ही आके मदद करते हैं लोगों की। तो उसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हो? देखो, येती इज आई मीन आई हैव नॉट सीन वन या, तो देखो ये काफी सालों से पीपल से दैट ये एक ये बोलते हैं अबॉमिनेबल ह्यूमन या ऐसा कुछ बोलता है ना। तो ऐसे बहुत सारे बीइंग्स है, not just in Yeti. Yeti is supposed to be a big monkey-like structure and a man, मतलब वैसे टाइप का है, मतलब मॉन्स्टर काइंड ऑफ अ पर्सन। तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं है, yeah, but it is still a mystery. Nobody knows whether it's present or where it is. ये नेपाल में ही है या कहीं और है। हम लोग if you remember when we were small, I used to read a lot of Tintin comics, yeah. तो वहाँ पे एक there is a comic called Tintin in Tibet, तो वहाँ पे भी यति का पूरा है वहाँ पे, how, yeah. So this is a depiction. हो सकता है नहीं है, but there definitely are higher beings than human beings which are there, and they could manifest and they may not manifest themselves. It completely see, there are when you go there now, when you go in the Himalayas, higher up in the Himalayas, there are many things which are supernatural. आपको पता भी नहीं चलेगा, but there are supernatural things that are happening. Many. And वहां के जो लोग हैं, काफी लोग जानते भी है, but they are used to it. They know ऐसा ही है. So I was watching one of my favorite travel bloggers, so they were saying कि ये लोग ऐसे बैठे हैं, एक लेक है, तो वो वहां पे बैठे हैं, और suddenly they see a balloon, एक balloon like structure approaching them from, ये हिल्स है, 2 हिल्स ऐसे है, उसके बीच में से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है उड़ के, प्रोमिनेंट बलून टाइप स्ट्रक्चर। तो उड़ के उनके मतलब इट केम एंड इट लैंडेड ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे सिर्फ मतलब ग्राउंड में कोई वेजिटेशन कुछ नहीं है, या इट्स अ प्लेन ग्राउंड, वहां पे आके गिरा, ठीक है, जस्ट 100 meters अवे। द मोमेंट इट टच द ग्राउंड, so these guys they ran there to see what it is. वो पहाड़ के ऊपर से नीचे आया, मतलब it descended, तो कुछ ना कुछ तो होगा। They went there and they saw nothing. कुछ भी नहीं है आसपास, लेकिन इतना बड़ा बलून लाइक स्ट्रक्चर नीचे जमीन पे आया, क्या। एंड द नेक्स्ट डे वहां पे न्यूज में दिखाया गया कि देयर वाज अ यूएफओ दैट वाज साइटेड इन दैट प्लेस, या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये काफी सारे ऐसे मिस्ट्रीज है वहां पे जो अनसॉल्व है, और जो सॉल्व भी नहीं शायद हो सकता, एंड वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट आल्सो, because there are some things which are beyond our intellect, yeah. Himalayas, if you want to really understand Himalayas, you have to go beyond the intellect, and you have to be very open and receptive to the mountains, yeah. And आप जब जाते हो ना, तो आप जब वो विशाल माउंटेन को देखते हो, and it automatically that humility comes to you, आपको लगता है कि you are nothing। आपको पता है आप जब जा रहे हो, वो हाँ, you're nothing in front of those mountains, वो विशाल big mountains you see in front of you, and you just, आपका ना वो जो माइंड होता है ना, वो माइंड कैप्चर हो जाता है। मतलब I think that is also a reason why temples are built on mountains. So you go there and you see that huge structure there and the huge mountains, and immediately आपका मन जो है वो present moment में आ जाता है, immediately।
I was reading it somewhere that Gurudev was explaining that क्यों ऐसे ऊपर mountains के ऊपर temples वगैरह रहते हैं, monasteries, because when you go and walk up there, तो आपका जो breathing है ना, वो breathing में change होता है, like you breathe faster, और आपका मतलब breathing में थोड़ा changes आता है because you're walking up. So it's like a pranayam that is happening. Yeah. So that pranayam is happening. कुछ क्रिया हो रहा है आपके अंदर. And the moment you go there, and the moment you sit in that temple in front of that monastery or temple, जहाँ पे भी आप जाते हो, the moment you sit there, suddenly you are again rejuvenated. जो आपका energy loss हुआ वहाँ पे चढ़ने में, इतना calories loss हुआ, you go there and you sit and immediately you get into meditation. Immediately. Yeah, that is again another reason. Again, Himalayas are very good places to meditate, you know, very high energy. Meditation must होता है कुछ कुछ जगह में, definitely. डेफिनेटली अ हाई एनर्जी प्लेस। और मैंने तो कुछ कुछ वीडियोस भी देखे थे बिफोर आई वाज गोइंग टू दिस सेशन। मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी वीडियोस आए जहाँ पे पूरे ठंड में कुछ योगीज होते हैं जो बिना कपड़े के वहां पे दिख जाते हैं आर्मी पर्सन्स को। काफी सारी These are और all मिस्ट्रीज है। ये सब Yes. सिद्धीज है योगीज में। या दीज आर हायर योगीज। जब आप साधना में आगे बढ़ते हो, और एंड दीज आर गिफ्ट्स, यू नो, दीज सिद्धीज दे कम टू यू। गुरुदेव वाज सेइंग ना, आई मीन इफ यू आर हैंकरिंग, इफ यू थिंक दैट ओके आई विल गो टू द हिमालयस एंड आई विल गेट दोस सिद्धीज, ऐसे नहीं होने वाला। या या ऐसे नहीं होता। सो व्हेन यू आर इन साधना, आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। दीज आर गिफ्ट्स दैट कम फ्रॉम द मास्टर, फ्रॉम द डिवाइन। तो आप साधना के पथ में रहो। तो साधना इज नथिंग, एज गुरुदेव वाज सेइंग, यू नो, सत्संग फ्यू डेज बैक। साधना में क्या होता है, आपका जो पात्रता है वो और भी पॉलिश्ड होता है। आपका पात्र जो है, दैट वेसल बिकम्स मोर एलिजिबल टू रिसीव द ग्रेस। तो साधना सेवा सत्संग तो इसीलिए करते हैं। तो आप वो करो जब आपको ये सब सिद्धीज मिलना है। When it is time for you to receive it, you will get it. You don't have to hanker for it. आपको ऐसे ढूंढना नहीं, मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये चाहिए, ये आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। Yeah, of course you can have that desire that मुझे, yeah. But it will come when it has to come. It has a time, and that is completely dependent on something else. Yeah? You keep your path, you keep your vessel clean always. You never know when it comes. बोलते हैं ना एडवांस कोर्स में, एवरी टाइम यू सिट इन एन एडवांस कोर्स द टीचर विल से कि आप 100% दो, क्या पता यही वो कोर्स हो जहाँ पे आपको वो मुक्ति मिले। हाँ, एवरी टाइम यू गो टू एन एडवांस कोर्स, ये टीचर विल टेल यू दिस। या इट्स लाइक दैट। कब आपको क्या मिलेगा आपको नहीं पता। इसके लिए आपको हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। या यू कैन गेट इट एनीवेयर व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू गेट इट। हिमालय में लोग क्यों जाते हैं, साधु क्यों जाते हैं? Maybe, you know, they feel that energy. Yeah, but we have Gurudev with us. Yeah, we don't need anything else. Yeah, we can just go to Gurudev. Yeah, that's it. ये चीज तो भैया बहुत जबरदस्त आपने बताया। एंड मैंने कुछ दिन पहले एक साहिल भैया के साथ, इज एन एस्ट्रोलॉजी, उनके साथ भी सेशन करा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ट्रैवलिंग में ना हमें कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। मींस वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं यूट्यूब में। मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आपने ये भैया की बातें सुनी, बट अगर आप वो चीज देखना चाहते हो विजुअल्स वीडियो के फॉर्म में, तो प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया, और ये आपको यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तुरंत मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह डाल दूंगा, सो यू कैन गो देयर, चेक आउट द वीडियोस। एंड वो जब मैंने वीडियोस देखा तब जाके आई वाज एक्चुअली फीलिंग कि क्या जगह है। आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। सो आप लोग वो चैनल को भी, भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भैया, इफ यू कैन टेल योर चैनल नेम, द ब्रेथटेकिंग टेल्स। It's the breathtaking tales. The breathtaking tales. Yeah, it would be wonderful to have all of you. Yes. और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा बहुत दिन से इच्छा है कि भैया जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो हम लोगों को भी साथ में लेके चलो। Yes, वो लोग भी इंटरेस्टेड है। It would be wonderful. तो एक हैप्पीनेस कोर्स का भी जो होता है, रिफ्रेशर कोर्स भी चलता रहेगा वहां पे। नॉलेज पॉइंट जब भैया बताएंगे तो वो भी अलग तरीके से हमें टच करेंगे। एंड मे बी अगर वहां पे हम लोग लाइव लॉन्ग सुदर्शन क्रिया करें तो क्या एक्सपीरियंस होगा।
तो जो लोग भी Absolutely. जो लोग भी इंटरेस्टेड है अपना नाम नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, तो हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे उस टाइम में। और यस, तो वो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग, हाँ भैया प्लीज। मैं तो एक चीज आप सबको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं सबको अच्छा, somebody is asking me please the name of the Siddhas. I really don't know the name of the Siddhas. Yeah, you don't have to know the names also, right? Yeah, they're higher beings. They're here also. Yeah, yeah. That everywhere you meditate, ये बोलते हैं ना अस्तु देवता भी होते हैं ना। अस्तु देवता क्या होता है, हम लोग हैप्पीनेस कोर्स में सीखे थे ना। So what do they say? They say तथास्तु, है ना? Wherever, so where are these devtas? These devtas are at places where there is meditation, जहाँ पे ध्यान हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सेवा यहीं पे है। ये देवता पॉजिटिव एनर्जी यही है क्या? तो सिद्धार्थ का नाम ऐसे अगर आप खोजने जाओगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, किसी को जान, मतलब कोई भी नहीं जानेगा। Yeah, so these are higher beings. They're always, these are the beings which control the whole universe, you know. They who control the whole, all the activities. Yeah, Siddhas. Yeah? Gurudev has really, you know, he has elaborated on, you know, the stages of beings in this creation. We have human beings. After that, you have Pitralok, yeah? Pitras and Gandharvas. Yeah, all these are stages. Then Siddhas, Guru, Devtas and Siddhas, Guru. Huh? So this is the stage. Yeah, these are, so you can watch his talks. I think this is in Kena Upanishad. Yeah, Kena Upanishad. He has really spoken elaborately on this. Yeah, about higher beings on this planet. So what I was suggesting all of you is that you should all visit Rishikesh. This is my personal experience. Rishikesh में ना, these are the foothills. Rishikesh is the foothills, Shivaliks. लेकिन ऋषिकेश का जो एनर्जी है ना, it's a mind blowing energy. आप कभी भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स वहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो आप कर सकते हो। और वहाँ पे एक जगह है which is one of my personal favorites. I don't know if you have been there or not. आप मुझे नहीं पता कितने लोगों को वहाँ पे गीता भवन पता है। Yeah, it is just near Maharishi Mahesh Yogi's ashram. Yeah, जो वेद निकेतन आश्रम है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का, वहाँ से आगे जाना पड़ता है थोड़ा, और वहाँ पे गीता भवन है। गीता भवन और गीता समथिंग लाइक दैट, यार फॉरगॉट। तो उसके ऑपोजिट में ना, आप वो एक मडी ट्रेल है, वहाँ पे एक मड ट्रेल है। तो वो मड ट्रेल को आप फॉलो करते करते आप नीचे चले जाना बैंक्स में। वो बैंक्स में ना काफी सारे बोल्डर्स या पत्थर ऐसे मिलेंगे। ओके, कभी भी टाइम मिले आप अगर जाते हो ऋषिकेश, जस्ट गो देयर, और गो देयर अलोन विथ योर ग्रुप व्हाटएवर। वहां पे आप जाओ और वहां पे पत्थर में बैठ के आप गंगा के किनारे आप वहां पे जाके थोड़ा ध्यान करो, एंड देन you share your experiences with me, maybe in this thread only later on. Yes. It is one of the best experiences of meditation, you know, in that place. कुछ तो है उस जगह। Yeah. Just imagine Gurudev and just sit there and meditate. Yeah, those places are beautiful, wonderful places. Yeah. Yes, मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग भी इंटरेस्ट जग गया जरूर कुछ ना कुछ प्लान कीजिए इस चीज को लेके। यस, वो somebody is asking नाम बताओ। नाम तो मुझे भी नहीं पता जगह का। It's just a normal place. वहाँ पे कोई जाता नहीं है, ऐसे ही एकदम एंड में है। मतलब आप वेद निकेतन आश्रम से आगे जाओगे ना, लेफ्ट में वेद निकेतन आश्रम है, आप थोड़ा आगे वॉक करोगे, so you have to walk for about 10 minutes and you'll reach that. Yes. वंडरफुल वंडरफुल। सो ये सेशन बहुत जबरदस्त रहा भैया, एंड वी ऑल केम टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। कई और भी चीजें होती है, एनर्जीज होती है हिमालयाज में, उसके बारे में कभी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आप जो जानना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो लोग भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है थोड़ा सा बताइए आप कमेंट सेक्शन में। जो लोग अपना नंबर छोड़ सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भैया जाएंगे तो there are some spooky experiences also, थोड़ा, लेकिन यहाँ पे लोग डर जाएंगे, अभी नहीं बात वो भैया पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे क्योंकि यस यस
यस, यू मास्टर स्टोरी टेलिंग, ऐसा कोई कमेंट आ रहा है जूम में। डेफिनेटली, तो वो सारी चीजें भी होगी। नेक्स्ट सेशन भैया का जब भी रखेंगे, थोड़ा अघोरीज के ऊपर बात करेंगे, कुछ हिमालयाज के जो स्पूकी एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ और चीजें जो है कि सेशन बहुत कम पड़ जाता है। नो स्पूकी प्लीज, ओके डेफिनेटली। अभी रात का No, टाइम है not at आपको। night. Yeah, not at night. Not the right time. yes yes yes, because so many energies are still there। अब दाएं बाएं देखो, बिस्तर के नीचे हूँ। बहुत कुछ है वहां पे भी। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस। ये सेशन को जो लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। भैया के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए सारे लोग। द ब्रेथ टेकिंग टेल्स, ऐसा आप यूट्यूब में लिखोगे तो उनका चैनल आएगा, सब लोग सब्सक्राइब करें। और ये चैनल सत्वा टॉक्स को भी सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी ट्रैवल में इंटरेस्टेड है, या तो नंबर छोड़ दे या मुझे कांटेक्ट कर ले, तो हम लोग कुछ तो प्लान करेंगे भैया के साथ बहुत जबरदस्त, जहाँ पे हम लोग ट्रैवल करेंगे, मे बी लद्दाख और समथिंग, एंड देयर वी कैन हैव नॉलेज आल्सो, गुरु स्टोरीज आल्सो, एंड ट्रैवल आल्सो। और Absolutely. भैया जाने से पहले मैं कुछ आखिरी मैसेज? यस। हाँ, तो मैं तो ये कहूंगा आपको that everybody who's listening for the first time who has not yet subscribed to Abhishek's channel, this is Sattva Talks. I have been following this for quite some time. Some of my many of my close friends who are teachers now, so they have also contributed their experiences, and it's one of the best repositories of experiences. If you really want to understand guru stories, and this is the best time, somebody had just mentioned, it's absolutely one of the best times, because after the day when you hear guru stories, that really refreshes you. And the more you hear the glories about the master, the more settled you are. There's one way in the Bhagavatam, it is said that there are many ways you can really, Srimad Bhagavatam mein bolte hai that, there are many ways to get rid of your karmas, and one such way is listening about, that's one part of bhakti, listening about the master, listening about the divine. So when you hear about the divine, तो आपको लगता है कि मैं और सुनूं और भी जानूं, yeah? So that kindles that bhakti inside you also. Yeah. So those of you who have not yet subscribed to Sattva Talks, I would, you should. If you're not subscribing to it, you're missing something out. Yeah, I would definitely say this. And thank you so much, Abhishek, for inviting me once again to this place. And it's a pleasure talking to you always. यस And yeah, भैया, I wish everyone a belated happy Diwali. Yeah, and I hope you reach up to many thousands of people and inspire them. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा सेशन लगा, मुझे लग रहा है मैं सोने जाऊंगा तो मैं सपने में हिमालयाज ही देखूंगा। बिकॉज इट वाज सो मीन एब्सोल्युटली, जिसने कमेंट किया बहुत सही कमेंट किया, यू आर वंडरफुल स्टोरी टेलर, एंड दैट वी हैव सीन इन योर वीडियोस आल्सो। एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग एंड Thank you so शेयरिंग। much. Thank you so much.